Hello everyone, welcome to OPSC STUDY. My name is Siddharth Panda and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic, that is MCQs on Indian polity. Before going to the topic, OPSC STUDY has launched Geography Optional Foundation course with just a minimal price of 5,000 rupees, जोठी आपनको complete syllabus coverage सहित map works एवं previous year questions analysis मध्य कराजिबो. Even if you miss any classes, then you will also get the recorded video. Apart from that, you will also be given test series at the end of your complete of your syllabus basically. So this course will be a 7-month course जोठी कि आपनको thoroughly, slowly आपनको प्रत्येक यूनिट को कवर करा जिवो एवं आपनको important questions माननको probable questions मध्य discussion करा जिवो. तो I wish आपण माने टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु एवं ता सहित ये 7 months प्रोग्राम को एनरोल होंतु सो दैट आजिटू आपण बेटर प्रिपेयर हेले ऑप्शनल रे आपण बेटर मार्क्स स्कोर करि परिबे. सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्ट करिबा. दैट इज पार्ट 3. आंसर इज पार्ट 3 बिकॉज़ पार्ट 2 रे कोन अछि आपनकर सिटीजनशिप अछि. पार्ट 2 रे पार्ट 4 होची आपनकर कोन डीपीएसपी एवं पार्ट 4a होची आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल्स. आर्टिकल्स 12 to 35 is your fundamental rights. Next move to question number 3. Fundamental rights are derived inspiration from which country's constitution? Canada, the USA, French and the UK. The answer is USA. Fundamental rights are brought from USA. Next is which one of the following is not true about the fundamental rights? Fundamental rights are justiciable in nature. That is correct because fundamental rights रो जदि violation होची under article 32 आपण कोन करि परचंदी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करि परचंदी for the enforcement of fundamental rights. Hence fundamental rights are justiciable in nature. Fundamental rights in our constitution are more elaborated than US's fundamental right. Definitely, though we have brought the fundamental right concept from USA, आम constitution जो fundamental rights लेखा हिची सटा better elaborate करा हिची ताकू than USA. ठीक अछि. Fundamental rights are meant to promote the idea of social and economic democracy. This is wrong. Fundamental rights are to promote political democracy. मन रखितांतु political democracy. जेतेबेले कि social और economic democracies are provided by DPSP. So this is your wrong. Then आपनकर fundamental rights are essential for the overall development, that is material, intellectual, moral, spiritual of individual. This is also correct. So your answer here is C. Next question is originally how many fundamental rights were in our constitution? Originally केतेटा थिला 7टा थिला. मोर कितांतो आर्टिकल 31 which talks about right to property. Right to property was your fundamental right थिला जोटा कि अंडर आपनकर 44th constitutional amendment act of 1978 रे ताको डिलीट कर दिया है कि नया गोटे आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराला आर्टिकल 300A. नाउ right to property is a legal right. मन रखिता not a fundamental right but a legal right. So the answer is originally 7 थिला वर्तमान केते अछि 6 अछि. Next question is 6 rights guaranteed by the article 19 cannot be suspended on the ground of. मन रखितांतु आर्टिकल आपनकर केते ना 358. आर्टिकल 358 कोन कहूची? आर्टिकल 358 कहूची कि आर्टिकल 358 अंडर रे इमरजेंसी टाइम रे नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो. मन रखितांतु the 6 rights guaranteed by article 19 are automatically suspended under article 358 during national emergency. However national emergency ता दुई टाइप रो थाए. गोटे होची external emergency, गोटे होची internal emergency. So only in case of external emergency आपनकर 6 fundamental rights under article 19 is suspended. So external emergency रो ground कोन? one is war and second is your external aggression. এই দুইটা কেস রে হি आपनकर 6 fundamental rights এই দুইটা होची आपनकर कोन ना external emergency रो ground जोटा
बाकी रहिला आर्म्ड रिबेलियन जोटा एई केस रे आपनकर सस्पेंड होबो नाही. सो दिस इज योर आंसर एंड एटा होची आपनकर इंटरनल इमरजेंसी. नाउ so armed rebellion case re article 19 suspend hobo nahi. Only in case of external emergency, that is war and external aggression time re article 19 automatically suspend hobo. Definition of the state mentioned in which of the following articles? State jota achi a state word ro definition koti mention achi, that is article 12 re mon rakhi thantu. Next, which article prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? That is article 15 होचे आपनकर कि nobody or states cannot discriminate on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. एई ग्राउंड रे केबे आपनकर को पब्लिक प्लेस रे डिस्क्रिमिनेशन करके करि परिबो नाही मन रखितांतो. दैट इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 14 कोन राइट टू इक्वालिटी विषय रे कहूची. आर्टिकल 16 होची आपनकर कोन ना राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी in employment. Next, move to question number. With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. Among the following writs re mandamus writs kono kochi? Mandamus ro mane hochi we command. So will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. मन रखिथांतु mandamus writ जोटा सेटा को केस रे लागे? To enforce someone to do the public duty. जो कहा को हम ऑर्डर करिवो, कोर्ट ऑर्डर करिवो कि तमे तमरो इंटरेस्टेड पब्लिक ड्यूटी को करिवा दरकार. तो जदि गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मध्य पब्लिक ड्यूटी रो काम दिया हिची से केस रे mandamus लागिबो. सो mandamus will not lie against एटा कहूची. तो दिस इज रॉन्ग. लागिबो जदि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मध्य पब्लिक ड्यूटी दिया हिची से केस रे लागिबा कथा. इट इज नॉट लिखिची. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. This is also wrong because government company माने public काम करिवो से केस रे mandamus लागिबो. तो दुईटा स्टेटमेंट रॉन्ग ही गला आपन करो. Any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Quo warranto रो माने कोन ना on what authority, on what authority. तो को अथॉरिटी रे आपण सीट रे बसिछंती एई जिंसटा को वारंटो कहि थाए. तो को वारंटो मन रखि थांतु नॉट ओनली एग्रीव्ड पर्सन, को भी व्यक्ति को वारंटो रिट फाइल करि परिबो. मन रखि थांतु एई जिंसटा. सो दिस इज राइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट? सो योर आंसर इज sorry, तो 1 and 3 is your answer होगा because it mandamus will not lie against a private organization unless लिखा है sorry it is entrusted with a public duty. That means एटा ठीक अछि. माने मान से कहूची प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो लागिबो नाही ठीक अछि, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जदी पब्लिक ड्यूटी दिया छै से केस रे लागिबो सेटा कहूची जोटा के ठीक अछि. 1 and 3 will be your answer. Next is with reference to the deputy speaker of the Lok Sabha. Okay, as per the rules of procedure and the conduct of business in Lok Sabha, the election of the deputy speaker shall be held on the date as the speaker may fix. Yes, speaker कर election पर से deputy speaker रो election date टा निर्धारण करी थांती. This is correct. There is mandatory provision that the election of the candidate as deputy speaker of the Lok Sabha shall be from either of the principal opposition party or the ruling party. एटी लिखी मैंडेटोरी प्रोविजन अच्छी कि जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से आइदर अपोजिशन पार्टी रु रहिबे नहले रूलिंग पार्टी रहिबे कि मैंडेटोरी प्रोविजन अच्छी कि नाही. एंती किसी मैंडेटोरी प्रोविजन नहीं. 10th लोकसभा जाए कोन हितला 10th लोकसभा जाए बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कोन होतले ना रूलिंग पार्टी रु आउतले. हाउएवर 11th लोकसभा रे गोटे कंसेंसस गोटे समस्तकर सहमति रे डिसाइड हला कि जनरली हमें कोन करिबा ना speaker will be elect from your ruling party and deputy speaker will be elect from your opposition party. एटा गोटे just consensus थेला किसी mandatory provision नहीं. The deputy speaker has the same power of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings. Yes, deputy speaker जेतेबेले speaker absent थिबे तांको जागा रे deputy speaker रो रोल निभेबे से टाइम रे speaker रो सब पावर तांको मिलिबो. This is correct.
The well established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. No, आपनकर डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करिया पई जो मोशन टा को भी मेंबर ऑफ जो आपनकर लोकसभा से मूव करि परिबे और सेकंड मध्ये को भी मेंबर आउ जने मेंबर करि परिबे. इट इज नॉट बाय द स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर जरूरी नु को भी मेंबर करि परिबे. सो दिस इज रॉन्ग. 1 and 3 is your correct answer. Next question is, consider the following statement. Which of the following statement is correct? So ए भितर करेक्ट कोटा कहूची, pursuant to the report of the HN Sanyal committee, मन रखिबे नाटा HN Sanyal committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. This is correct. This is a previous year question actually. अब यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्तेला already. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for the contempt of themselves. This is correct. Constitution of India under Article 129 ଆଉ आर्टिकल 215 ए दुईटा आर्टिकल रे आपन को सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर देइची टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. मन रखि थांतो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. नो, कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी जगह रे मध्ये कंटेम्प्ट को एक्सप्लेन करा जाई नाही. सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज मेंशन इन द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 रे. मन रखि थांतो. सिविल कंटेम्प्ट कोन जदी आपण कोर्ट रो ऑर्डर को विलफुली डिसोबीडियंस कलेबा मानिले नाही विलफुली, देन ताकू सिविल कंटेम्प्ट कहा जिवो. क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोन जदी आपण जानि सुनी की कोर्ट को स्कैंडलाइज करिया पई चाहिए या कोनोसी कोर्ट रो जते काम चलीथिबो कोर्ट रे सुनानी होथिबो से टाइम रे आपण जे कि किछु उडे रकस क्रिएट करिवे सेठी या कोर्ट रो अथॉरिटी को डिमिनिश करिया पई चेष्टा करिवे, तो सेही केस रे आपनकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लागिबो. मन रखि थांतो. In India, the parliament is vested with the powers to make laws on the contempt of court. Yes, because parliament bonaichi contempt of court act. So yes, India re parliament is vested with the power to make laws on the contempt of court. So your answer is 1, 2 and 4. Next question is, with reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate. This is wrong. They are also advocate, तांको मध्ये recognize करा जाए advocate हिसाब रे. Bar Council have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of the law colleges. This is correct. बहुत static question अछि एटा. So the answer is only 2. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. Constitution requires a amending the constitution. मन रखि थांतो. Constitutional amendment bill कोन prior recommendation of President दरकार करे कि? No. Constitutional amendment bill पई कोनोसी prior recommendation of the President दरकार नाही. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give its assent. This is correct. मन रखि थांतो. Constitutional amendment bill रे there is no suspensive veto, there is no आपनकर absolute veto. You must give assent to the कोन constitutional amendment bill. एटा ठीक अछि. The constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and the Rajya Sabha by special majority, and there is no provision for joint sitting. मन रखि थांतो. जो सब जिनस सिंपल मेजोरिटी रे पास हुए सेही केस रे जॉइंट सिटिंग थाए. स्पेशल मेजोरिटी केस रे पास होथुवा जिनस रो कोनोसी जॉइंट सिटिंग न थाए. एठी जॉइंट सिटिंग नाही आपनकर. दिस इज आल्सो करेक्ट. तो 2 and 3 is your correct answer. Next question is, the Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. कौन Constitution of India एंती किछि क्लासिफाई करिछि कि? No. Only Constitution of India under Article 74 रे कौन मेंशन अछि? Council of State, Council of Minister headed by Prime Minister. एई जिंस मेंशन अछि. एई क्लासिफिकेशन टा मेंशन नाही. एई क्लासिफिकेशन टा कोठी लिखा हिछि आपनकर in the rules of procedure and the business of Lok Sabha जोटा से सबुतरे एई जिंस मेंशन अछि, but not in the Constitution. The total member of the Minister of the Union Government, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha. This is correct. एटा कोठी आपनकर मन रखि थांतु.
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 रे ए जिंस ए प्रोविजन टा इंक्लूड करा हला कि जेतकी मेंबर्स अछंती लोकसभा रे तार 15% रु बेसी आपनकर मिनिस्टर जोटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ताटू बेसी ही परिबे नाही इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. So this is only 2 is your correct answer. So this is the last question of the day. Hope you have liked the video. Thank you very much.